Hello, 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 and welcome back to Happy History. Are you ready for the fourth chapter titled History of Indian Arts? Yes, you are. So let's go. As you can see, this chapter has only four sections, which are what is art? Indian traditions of visual arts, Indian traditions of performing arts, and the last one is art, applied art and professional opportunities. मेरे दिमाग में एक सवाल आया है, पूछ सकती क्या? Please let me ask. You're very kind and you will help me. Well, my question is, what is art? Art क्या है? We humans generally like to share our experiences, wisdom and emotions, right? इंसान जो है उसको क्या अच्छा लगता है? जनरली सब इंसान में आपने ये हैबिट देखी होगी कि वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपना नॉलेज, अपने इमोशंस, उसके पास जो विजडम है वो लोगों के साथ शेयर करता है, राइट? डोंट यू डू दैट? यू डू एज वेल, राइट? So when these instinct of sharing experience, wisdom and emotions results in a beautiful creation, it is acknowledged as art. Okay? जब ये जो इंस्टिंक्ट है इंसान की कि मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है, अपनी विजडम शेयर करनी है, अपने इमोशंस शेयर करने हैं, ये सारा जो शेयरिंग है, जब वो एक ब्यूटीफुल क्रिएशन बन जाता है, इट रिजल्ट्स इनटू अ ब्यूटीफुल क्रिएशन, उससे हम आर्ट कहते हैं. ओके? So based on this definition of art, the instinct of sharing experience, wisdom and emotions resulting into a beautiful creation, ये जो definition अभी हमने देखी, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है? Can you guess the crucial factors at the root of this artistic creation? ये जो artistic creation है, उसके जो crucial factors है, आप बता सकते हो कि क्या है? Yes. The crucial factors at the root of artistic creations are power of imagination, sensibility, state of emotion, and the skills. Right? Power of imagination. आपको imagination करना आना चाहिए, right? Art ऐसे ही नहीं बन जाता. You see a lot of people writing songs, they're coming up with different dance forms, they're making paintings, ये जो भी है different art forms है. कैसा करते हैं? Because they have a good power of imagination, सोचने की शक्ति. Sensibility, you need to be sensible, right? State of emotion, आपके emotions क्या है? And the skills to put it out, those emotions, those imaginations, right? So you need power of imagination, sensibility, state of emotion and skills. But of course, किसका ये सारा जो है वो किसका? It is of course of the artist, right? Okay? Well, within this first section, what is art? There are three subsections: visual arts and performing arts, folk arts and classical arts, style in arts. So let's understand each one of them in detail. Visual arts and performing arts. These are the two forms of artistic creations. Okay, artistic creations के दो टाइप के आर्ट फॉर्म्स है, एक है विजुअल आर्ट्स और दूसरा है performing arts. So now do you know the Sanskrit words for these two names? ये जो visual art है और performing arts जो है उसके संस्कृत नाम भी है. So first let's see the visual arts. Okay? विजुअल आर्ट्स को दृक कला भी कहते हैं. दृक कला. अब हम इसे कैसे याद रखेंगे? We know the word दृष्टि, right? eyesight या दृश्य, सीन, right? ये हम हिंदी में पढ़ते हैं. दृष्टि, दृश्य, right? So उसमें से आपको द्रि खाली लेना है, as you can see DRI, okay? और उसके बाद में ओके का के लगा देना है. हम शॉर्ट फॉर्म में ओके नहीं लिखते, सिर्फ के लिख देते हैं, राइट? आप व्हाट्सएप वगैरह आप यही करते हो. सो दृक हो गया वहां से, दृश्य का द्रि या दृष्टि का द्रि प्लस के, सो दैट मेक्स दृक. फिर है परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसे ललित या अंगिक कला भी कहते हैं. ओके, ललित या अंगिक कला. ललित is somebody who is beautiful, who is gentle, who is loving. Okay, it's usually a name of a boy, right?
सो ललित, ठीक है। और आंगिक, आंगिक refers to something related to अंगिक, okay, body. Fine. So you're performing arts, you're using your body, right? Human body plays an important role in performing art, and that art is beautiful. Okay. So ललित और अंगिक कला भी उसे कहते हैं. सिंपल है, टेंशन नहीं लेने का. Okay. Well. Did you know that the origin of visual arts is as old as Stone Age? Yes, as old as Stone Age. How can you prove that? सोचो सोचो सोचो, कैसे समझ में आया, कैसे पता चला कि विजुअल आर्ट जो है वो स्टोन एज से भी चल रहा है? Well, many examples of prehistoric rock art have been discovered at many sites in the world. Okay? जो स्टोन एज के टाइम का जो रॉक आर्ट था, उन लोग रॉक्स पे पेंटिंग है, जो भी ड्राइंग जो भी करते थे, राइट, रॉक का यूज़ करते थे. तो आज बहुत सारी जगहों पे दुनिया में हमें ये रॉक आर्ट मिला है. ओके, सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ prehistoric rock art have been discovered at many sites in the world. Fine. Next is folk arts and classical arts. I'm sure folk arts और classical arts आपने अंदाजा तो लगा ही दिया होगा कि ये क्या है. So let's just have a quick look at it. Okay. So जो folk art है वो ancient tradition है which has continued from the prehistoric times. Okay, it's not something found recently. It's an ancient tradition. Prehistoric time से चली आ रही है. And it is spontaneous. Okay, वो कुछ उसके लिए preparation नहीं लगता. It's just spontaneous. It just happens. Okay, because it is a natural part of people's way of living. वैसे उनकी वो जिंदगी है. Okay, सो वो एक ज़माना था जहाँ पे लोग ऐसा इंस्टेंटली पोइट्रीज बना देते थे. सो दैट वाज स्पॉन्टेनियस फॉर देम. उनको बैठ के सोचना नहीं पड़ता था राइमिंग वर्ड्स, ये वर्ड्स, कुछ भी, बिकॉज दैट वाज देयर वे ऑफ लिविंग. फाइन. एंड इट रिक्वायर्स कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ सोशल ग्रुप. सबका पार्टिसिपेशन उसमें होना ज़रूरी है. Okay, so let's revise it quickly. Folk arts, ancient tradition, prehistoric times, spontaneous, natural part of people's way of living, collective participation of the members of a social group. And उसके सामने है अभी classical arts. Okay, or classical arts is not spontaneous. It needs long training to master, because it is expressed with an established frame of consistent rules. There are rules and regulations और उसको adhere करना, उसको follow करना ज़रूरी है. और इसके लिए long training की ज़रूरत पड़ती है उसको master करने के लिए. Okay, so it needs long training to master, expressed within established frame of consistent rules. Next is style in art. We've already discussed in the previous chapter that each artist has his or her own style of working, right? हम आगे के चैप्टर में देख चुके हैं कि हर एक आर्टिस्ट का अपना एक काम करने का तरीका होता है, उसका अपना एक स्टाइल होता है, राइट? बट ये जो स्टाइल है वो एक ट्रेडिशन भी बन सकती है. ओके, अ स्टाइल ऑफ पर्टिकुलर आर्टिस्ट कैन ऑल्सो बिकम अ ट्रेडिशन. बट इसके लिए क्या होना चाहिए? If it is adopted by many artists over a long period of time. Okay, जब कोई आर्टिस्ट की स्टाइल को बहुत सारे आर्टिस्ट अडॉप्ट करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा नहीं कि आज अडॉप्ट किया फिर कल भूल गए, एक महीना चला फिर छोड़ दिया, वैसा नहीं. ओके, सो यू नीड लॉट ऑफ आर्टिस्ट टू अडॉप्ट दैट एंड इट हैज टू बी सस्टेन. उसको लंबे अरसे तक लोगों ने उसको प्रैक्टिस करना है. ओके, so if it is adopted by many artists over a long period of time, and the style of an artist can become a tradition. And then these traditions get established as an art style. Okay? We know that in every culture, various art styles develop, right? हर एक कल्चर में बहुत अलग अलग तरह के आर्ट स्टाइल्स डेवलप होते हैं, राइट? वहाँ पे एक या दो होता नहीं है, देयर आर मेनी मेनी फॉर्म्स, राइट?
And these art styles are the characteristics of a certain period and region. ओके, ये जो आर्ट स्टाइल डेवलप होती है वो एक जगह की, ओके, एक रीजन की, एक पीरियड की, एक टाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. So these art styles are the characteristics of a certain period and region. We sometimes hear people saying, for example, ये मुगल के ज़माने का है, something like that, right? So it means that this particular art styles are the characteristics of a certain period and region. They are saying कि ये जो मुगल्स यहाँ पे थे वो ज़माने में ये practice होता था, okay? So it is a period and region of the Mughal that they are talking about. These art styles help us in understanding art history. आर्ट स्टाइल से हम आर्ट हिस्ट्री को भी स्टडी कर सकते हैं. फाइन, and with this we are done with the first section. Wow, very good. And we move ahead to the second section, Indian traditions of visual arts, which is, tell me the Sanskrit word for visual arts. Come on, you remember it? Yes, drishti. Okay, yes, drik kala. Drik kala, or the visual art, includes both art of painting and sculpting. Okay, painting और sculpting दोनों visual arts दृक कला के अंदर आते हैं. So let's first understand painting here. Painting, as we know, is two-dimensional, right? 2D है वो. Yeah. Then, some examples given in the book are sketches or paintings of nature, objects or individuals, right? इसकी पेंटिंग बनाते हैं या स्केचेस बनाते हैं नेचर का, ऑब्जेक्ट्स का या लोगों का. there are many different things that you can draw, right? So where is it done? कहाँ पे इसकी स्केचिंग या पेंटिंग करने में आती है? think from past as well, okay? खाली अभी के टाइम का मत सोचना. Yes, these paintings or sketches are done on various surfaces like rocks, walls, papers, canvas of different types, earthen pots, right? I'm sure you must have seen at least few of them, like paintings on walls, papers, canvas, earthen pots. Let us now engage with various styles of painting. First on the list is folk styles of painting. Here we refer to rock paintings, means something from the time of stone ages, right? Folk styles of painting जो है वो हम ancient age की बात कर रहे हैं, something from the time of the stone ages. Well, do you know where in India do we have rock painting sites? इंडिया में कहाँ कहाँ पे ये sites है पता है आपको? It's easy to remember. So we have 3 Pradesh here. Okay, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Andhra Pradesh. 3 प्रदेश हो गए. Fine. Now, यूपी, उत्तर प्रदेश के बाजू में कौन सा स्टेट आता है? बिहार. So Bihar is also on the list. Let's move to the state of Andhra Pradesh. Okay, so Andhra Pradesh actually was divided into 2 states, right? This is recent history. So we know that it is not just Andhra Pradesh now, अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों हो गया, right? So वो भी आ जाता है. और ये दोनों के बाजू में कौन है? कर्नाटका. So Karnataka is also on the list. Fine. So the list includes Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Bihar, Telangana and Karnataka. जब हम रॉक पेंटिंग्स की बात करते हैं तो यूजुअली वहाँ पे ह्यूमंस, एनिमल्स, ज्योमेट्रिक फिगर्स ये सारा देखने में आता है. बट वी नो नथिंग इज कांस्टेंट इन लाइफ, राइट? इट कीप्स चेंजिंग. सो फिर रॉक पेंटिंग्स कैसा कांस्टेंट रह सकता है? उसके अंदर भी तो चेंजेस आएंगे, राइट? ओके, सो आई मीन इट हैज आल्सो चेंज्ड एंड दिस चेंजेस आर अकॉर्डिंग टू द cultural changes. They are according to the cultural changes from stone ages to the beginning of agriculture. So what changes are visible? Can you guess some possible changes? Try. Yes, it is in the depiction of flora and fauna. We said agriculture, right? Stone age से agriculture की बात कर रहे हैं. So you have depiction of flora and fauna now. Okay, and also various figures and the colors used, right? With time colors बनने लगे, so even there is a variety in that, and this is the outcome of development.
Today we have many, many, many colors. In the rock paintings, black, white, and red were the colors used. Of course, they were made from natural substances, and that's a good part. No chemicals, natural substances. And remember that every art speaks, right? I mean, it conveys something. So, these rock paintings help us understand the knowledge of ancient people about their natural surroundings and also the way they exploited available natural resources. So जब हम ये रॉक पेंटिंग्स की बात करते हैं तो उससे हमें क्या समझ में आता है? एज वी सेड इट कन्वेज समथिंग, राइट? सो उससे हमें क्या समझ में आता है? वी अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ एंशियंट पीपल अबाउट देयर नेचुरल सराउंडिंग्स. उस जमाने के जो लोग थे उनका, उनके आजू बाजू में जो उनका नेचर था, उनका जो सराउंडिंग था, उसके बारे में उनका क्या नॉलेज था, वो हमें समझ में आता है. ओके, and we also understand the way they exploited available natural resources. जो वो टाइम पे resources available थे उसका उन्होंने किस तरह से यूज किया. How did they use those resources for their advantages? Okay, well, the title is Folk Styles of Painting and we have been talking about rock paintings. By Q. Well, actually, the folk styles of painting closely resembles the style of rock paintings. Really? Pankaisa? How? Well, customs of decorating house walls and courtyards with rangoli, which is actually rangavali. Okay, इसको रंगावली बोलते हैं, but अभी हम रंगोली उसे बोलते हैं, right? So by drawing various figures, symbols, or using panels of paintings to narrate stories played an important role in the development of regional styles of folk paintings. Right? So रंगावली and रंगोली करने में आती है जिसके अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स, सिंबल्स वगैरह होते हैं. एंड यूजुअली उसके अंदर कोई ना कोई स्टोरी नरेट करने में आती है. ओके, सो सम एग्जांपल्स आर वारली पेंटिंग्स, ये आपने सुना होगा, राइट? वेरी फेमस वारली पेंटिंग्स है, पिंगुल है या चित्रकथी है. चित्र मीन्स ड्राइंग, कथी इज अ स्टोरी, राइट? कथा बेसिकली. सो चित्रा कथी. ओके, लाइक कथा. So just making it easy for you to remember that way by breaking the word. Okay, so as given in the book, Pingul or Pinguli and Chitrakati is basically narrating stories from Ramayana and Mahabharata using wooden puppets and paintings like a puppet show. Okay, the second on the list is classical styles of paintings. From where does our knowledge of classical styles of painting come from? Of course, from the ancient Indian texts, right? जो पुराने ज़माने की जो बुक्स है उसमें से हमको क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग के बारे में पता चलता है. Because explain them in detail. It has 64 arts mentioned in them. This art of painting is known as or is referred as Alekyam or Alekya Vidya. Alekyam or Alekya. Okay, Alekya, which means portrait, and these are portraits, right? We're talking about paintings. So remembering meaning of Alekya or Alekyam is easy. It means portrait. Now how do we remember Alekya? Yeah, Alekyam. How do we remember these words? So let's break this in two parts. A plus Lekya, A plus Lekya. Writing is known as लिखना, right? हम लिखना बोलते हैं. So लेख्य, or you know लेखक meaning writer, or लेख meaning text, right? So remember लेख्य. But here we are not writing, we are painting. So we add a as we generally do while making opposites in Hindi, right? हम बहुत सारे बार हिंदी में opposites की बात करते हैं तब usually a लगा देते हैं word के आगे, right? बहुत सारे opposites, not every opposite. So लेख्य के आगे a लगा देंगे, अलेख्य. Yeah, easy peasy. Next, what we have is, it says that classical styles of painting has 6 main aspects. Okay,
ये जो क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग है उसके 6 मेन एस्पेक्ट्स हैं एंड दे आर नोन एज शदंगे. शदंगे. ओके, शद 6 पे से आता रहेगा, राइट? सो शदंगे which are as follows. First, रूप भेदा, meaning different shapes and forms. रूप भेदा. Roop is a Hindi word, right? And we know it refers to beauty, right? उसका रूप कितना अच्छा है सब बोलते हैं, right? So it refers to beauty. And with respect to art, हम यहाँ पे इंसान की ब्यूटी की बात नहीं कर रहे, हम आर्ट के ब्यूटी की बात कर रहे हैं, right? So when we talk about the beauty of the art, we mean the shapes, the different forms that a person uses, right? So रूप भेदा, different shapes and different forms. Okay, भेद, differentiate, right? We हिंदी में बोलते दोनों, इसके बीच में भेद बताइए या भेद कीजिए, meaning to differentiate. So different. So thus different shapes and forms. यानी रूप भेदा. Simple. Second is pramana, which means proportionate depiction of various features of an image. It implies, yeah, pramana, there has to be balance, right proportion. That's pramana. नहीं तो आपका ड्राइंग अच्छा नहीं होएगा, right? So प्रमाण में होना चाहिए, प्रमाण, proportionate. Okay, next is bhava. You know what it means, right? It means expressions. We say in Hindi, हम हिंदी में बोलते हैं ना कि उसके चेहरे का भाव या उसके चेहरे का हाव भाव बदल गया, right? So we talking about the expressions, भाव. Okay, देन इज लावण्य योजना. कौन सी योजना? लावण्य. कोई और योजना नहीं कर रहे हम यहाँ पे, हम लावण्य योजना कर रहे हैं. सो डू यू नो एनीबॉडी नेम्ड लावण्य? लावण्य इज बेसिकली ब्यूटी. यहाँ पे हम पेंटिंग, रूप, लावण्य सब एक ही मतलब है. ओके, सो लावण्य मीन्स ब्यूटी. ओके, सो लावण्य योजना इज अबाउट एस्थेटिक्स, इट्स अबाउट ब्यूटी. फिर है सदृश्यता. सदृश्यता, it means resemblance for reality. Okay, resemblance to reality. Such, s for such, which is reality, and s for sadrushyata. Sadrushyata means resemblance to reality. And finally, वर्णी का भंग. इट मीन्स कलर कॉम्पोजिशन. हिंदी में हम बोलते हैं ना वर्णन कीजिए, राइट? वर्णन, लाइक डिस्क्राइब, राइट? अ कॉम्पोजिशन, राइट? सो वर्णी का भंग should remind you about color composition, right? वर्णन कीजिए, composition लिखिए. तो वर्णी का भंग, color composition. आर्ट्स में कलर का ही composition होगा ना, और कुछ हमारा हिंदी, इंग्लिश, मराठी वाला composition नहीं है यहाँ पे, color composition है. So these are the 6 main aspects. Let's just take the names, okay? रूप भेदा, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सदृश्यता एंड वर्णी का भंग. आता क्या है? आता है मिनिएचर पेंटिंग्स इन मैन्युस्क्रिप्ट्स. मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर जो पेंटिंग हो रही थी उसकी यहाँ पे हम बात करेंगे. It's a very simple thing to understand and remember, okay? So the miniature paintings in the early manuscripts show an influence of Persian style. I'm sure this must have reminded you of the Mughals from the second chapter, right? Persian style की हम जब बात करते हैं, याद है वो 2 लाइन्स जो हमने सेकंड चैप्टर में लिखी थी? आया दौर मुस्लिम शासन का, यानी अरबिक और पर्शियन असर का. याद आया? Yes. So during the time of Mughal emperor, Persians की बात हो रही है, right? So मुस्लिम शासन हम बोले यहाँ पे. So Mughal emperor अकबर के टाइम पे we can see that the miniature style जो था पेंटिंग का had a blend of Indian and Persian styles. Okay, so plain Persian नहीं था, there was a blend, Indian और Persian style का blend करने में आया था. And also during the time of the Deccan Sultanates, the Deccan miniature style was developed. Deccan के टाइम पे Deccan style develop हुआ. Okay, so here we have 2 styles. One is Deccan, which is developed during the time of the Deccan Sultanates, and the blend of Indian and Persian during the time of the
Mughal Emperor Akbar. Well, next is the Western style of painting. I'm sure आपने अंदाजा लगा लिया, आपने ऑलरेडी सोच लिया है कि ब्रिटिश के टाइम की बात है, राइट? वेरी गुड, यू आर स्मार्ट. यस, इट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश रूल. और कैसे हुआ? जब इंडियन आर्टिस्ट, ओके, व्हेन इंडियन आर्टिस्ट came under the influence of European style of painting. इंडियन आर्टिस्ट पे किसका असर हुआ? यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग का. और वो ज़माने में आर्ट स्कूल भी एस्टेब्लिश हुई थी. किसने करी थी? जेम्स वेल्स ने, जो एक स्कॉटिश आर्टिस्ट थे. ओके, वो स्कॉटलैंड से थे, सो स्कॉटिश आर्टिस्ट थे. एंड दिस हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ सवाई माधवराव पेशवे. सवाई माधवराव पेशवे इन शनिवार वाड़ा पुणे. ये नाम तो आपने सुना ही होगा, शनिवार वाड़ा पुणे, राइट? सो सवाई माधवराव पेशवे. और ये जो स्कॉटिश आर्टिस्ट है, उन्होंने पोर्ट्रेट बनाया था. What did he make? He made a portrait. बोले तो अलेख्य. किसका बनाया था? सवाई माधवराव पेशवे और नाना फडणवीस का. ओके, यहाँ पे हम मिलते हैं गागाराम तंबाट से. गागाराम तंबाट कौन थे? ये मराठी आर्टिस्ट थे जिन्होंने जेम्स वेल्स के साथ काम किया था. गागाराम तांबट, a Marathi artist who worked with James Wales. Interestingly, some of his work is preserved at Yale University. जो गागाराम तांबट है, उनके जो काम है आज भी प्रिजर्व हुए हैं. कहाँ पे? येल यूनिवर्सिटी में. और इनकी खासियत आपको पता है? What was his specialty? He made drawings of the rock-cut caves at वेरल एंड पार्ले. अरे यार, मैं क्या कर रही हूँ? पार्ले कहाँ से आ गया? कारले है, कारले. वेरल एंड कारले, नॉट पार्ले. ओके, वेल ये सब तरीका है आपको हेल्प करने का, सो इजी टू रिमेम्बर. सो ही मेड ड्राइंग्स ऑफ द रॉक कट केव्स एट वेरल एंड कारले. एग्जाम में ध्यान रखना, पार्ले लिख के मत आ जाना. वेरल एंड कारले. सो हम वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं, बट उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसकी क्या खासियत क्या है? तो खासियत ये है, एग्जैक्ट पोर्ट्रेयल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग. एग्जैक्ट पोर्ट्रेयल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग. जिसका पेंटिंग करने में आ रहा है, उसका एग्जैक्ट पोर्ट्रेयल बनाते हैं. ओके, क्या आपने जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री सुना है? Yes, JJ School of Art and Industry, मुंबई में है, and it's a very good institution for those considering fine art courses. Okay, अगर आपको fine art courses करना है तो it's a very good institution. मुंबई में ही है, and it was established in the year 1857. 1857 को और क्या हुआ था? याद आ रहा है? कुछ और भी हुआ था. A very important year. याद आ रहा है? Yes, National Uprising Movement of 1857. One of the alumni of this, यानी वहाँ का एक student, okay? So one of the alumni of this JD institution was Pestonji Bomanji. Pestonji Bomanji. बोमन ईरानी ने कहा, क्या कहा मैंने? Pestonji Bomanji, okay? Who made replicas of Ajanta paintings. अजंता की जो पेंटिंग्स है उसके रेप्लिकास इन्होंने बनाए हैं. पेस्तोंजी बोमनजी, हु इज एन अलुमनाई ऑफ जेजे स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री. सो विजुअल आर्ट यानी दृक कला का जो एक पार्ट था पेंटिंग, वो हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है. और अभी हम स्कल्पटिंग की ओर जाएंगे. ओके, स्कल्पचरल आर्ट की तरफ जाएंगे. सो स्कल्पटिंग जो है वो 3 डायमेंशनल है. इट्स 3D, राइट? इट्स नॉट 2D. ओके, और उसके अंदर क्या आता है? इमेजेस है, स्टैच्यूज है, पॉट्स है, ऑब्जेक्ट्स है विथ आर्टिस्टिक एम्बेलिशमेंट. ओके, images, statues, pots and objects with artistic embellishment. Now let us know or let us understand what is used to make sculptures. Okay,
ये जो स्कल्पचर्स बनते हैं या स्कल्पटिंग जो होता है उसके लिए क्या यूज होता है, which means what are the different types, okay, different types of sculpting. So पहला तो है rock. Rock sculptures are made by carving rocks, okay. जो rock का है वो उसका sculpting करने के लिए उसको carve करना पड़ता है, right. Then the second is metal sculptures, जिसके अंदर we use molds, okay. Molds are those shapes basically, fine, ताकि उसको वो shape दे सके, so we use molds. And finally we have clay sculptures, जो क्ले से स्कल्पचर्स बनते हैं. तो इसके लिए हम हाथ भी यूज कर सकते हैं, लाइक यू गिव शेप, यू हैव मस्ट हैव प्लेड विथ क्ले, राइट. सो you can use your hands directly or you can use the molds as well. So let us engage with different forms of sculptures now. First है folk styles of sculptural art, जैसे पेंटिंग में था वैसा folk styles है यहाँ पे, okay. So I'm sure you know that it is from the Stone Age. कोई नया नहीं है, it is there since the time of Stone Age, right. So people at that time used to make tools from stones, right, which can be said to be the beginning of the sculptural art. Also, we are aware of the custom of making clay images for rituals, and this custom has been prevalent since the time of Harappan times, okay, and it is practiced even today in regions like Bengal, Bihar, Gujarat, Maharashtra. MBBG, okay, MBBS नहीं है, मुन्ना भाई MBBS नहीं है, मुन्ना भाई MBBG, Maharashtra, Bengal, Bihar and Gujarat, okay. So folk styles में हम stone age से बात कर रहे हैं, वो पहले के ज़माने में stones यूज़ करते थे sculptures बनाने के लिए, और अभी हम उसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं और clay की बात कर रहे हैं, जो जिसके थ्रू बहुत सारे images बनाने में आते थे, जो अलग अलग rituals है, prayers के लिए, customs के लिए यूज़ करने में आते थे, okay. Then the second style is of course the classical style. अभी हमने हरप्पन की बात करें, right. We just mentioned Harappan in the previous section. So what does Harappan seals, stones or bronze convey? हरप्पन के जो seals, stones और bronze है वो हमें क्या बताते हैं? Well, they tell us that Indian tradition of sculptural art, which is 5,000 years old or even older than that. ओके, इंडियन स्कल्पचरल आर्ट जो है, स्कल्पटिंग जो होती है इंडिया में, इट्स एज ओल्ड एज 5,000 years या उससे भी ज़्यादा. वाओ, इट्स वेरी ओल्ड, ठीक है. Do you know when did the tradition of carving stone sculptures of larger size begin? हम अभी छोटे की नहीं बात कर रहे, राइट. तो छोटा तो हमने ऑलरेडी देख लिया, अभी बड़े बड़े स्कल्पचर्स बनाने की बात हो रही है. So do you know when this tradition start? Yes, it began during the Mauryan period with the Asokan pillar. Mauryan period में अशोका पिलर से शुरुआत होती है, okay. It is said that the Sachi stupa was erected in Emperor Ashoka's time. So हम इसे कैसे याद करेंगे? Sam. Hi Sam. Well, who is this Sam? S for Sachi stupa, A for Ashoka and M for Mauryan. Hi Sam. Okay. So art is continuous, right? Yes, the beautiful sculptural embellishments of the stupa are supposed to be added later. Here we are talking about as for such stupa. Okay, हम stupa की बात कर रहे हैं, उसके अंदर बाद में क्या addition हुआ था. So जो उसके sculptural embellishments जो है वो बाद में add हुए थे. Okay. Another example is barud. Barud. Oops. It's not Barud. It's Barhut. Barhut. Okay? You know, it's just a trick to remember. Right now you are smart. The sculptures at Barhut confirms that the continuous development of sculptural art in India. वो देख के हमें पता चलता है कि जो art है sculptural art का, उसमें continuous development हो रहा है. Right? You can see the changes from the previous one.
यहाँ पे और मेंशन किया है बुद्धिस्ट स्तूपास, जो इंडिया में भी है और दुनिया में काफी जगहों पे भी है. ओके, सो वी टॉकिंग अबाउट बुद्धिस्ट स्तूपास which are not just in India but also in all the countries where Buddhism has spread. Ladies and gentlemen, here comes the largest stupa of the world. Yes, let's have a look. It is Borobudur. Borobudur in Indonesia, which was built during the 8th and 9th century. Big round of applause for Borobudur stupa from Indonesia. And today it is a World Heritage Site. Here we are with Indian iconography. Iconography? What is iconography? Iconography is a branch of knowledge which includes everything about making of images of God and goddesses. Iconography is a branch of knowledge which includes everything about making of images of gods and goddesses. It's a branch of knowledge which includes everything about making of images of gods and goddesses. Or, yeah, cool. Well, the first school that is mentioned is Gandhara School. Gandhara School of Art, which was established in the 2nd century BCE. Okay, it's BCE, and it was in Afghanistan and the neighboring region. Sadly, today Afghanistan is going through a lot of trouble. Let us pray for some peace in Afghanistan. So, it is Gandhara School of Art in Afghanistan and its neighboring region. Of course, it had Persian influence and also it had Greek influence. So, Persian and Greek together. So, we're gonna remember Pag. Pag, Persian, Afghanistan, Gandhara, Greek. ओके, पर्शियन एंड ग्रीक लास्ट में है. इन्फ्लुएंस वाला किधर हुआ था? अफगानिस्तान में. कौन से स्कूल पे? गंधारा स्कूल पे. सो पर्शियन, अफगानिस्तान, गंधारा एंड ग्रीक. हो गया सिंपल. और इंडिया की बात करें तो वी हैड मथुरा स्कूल एस्टैब्लिश्ड इन 1st to 3rd century ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुशाना पीरियड. मथुरा स्कूल, कुशाना पीरियड. When we say मथुरा, जब हम मथुरा की बात करते तो हमें इमीडिएटली लॉर्ड कृष्णा याद आ जाते हैं, राइट? मथुरा, लॉर्ड कृष्णा. सो हम मथुरा और कुशाना याद करना, हमें कृष्णा याद नहीं रखना है. मथुरा एंड कुशाना, कृष्णा पे से हम उसे याद रखेंगे. ओके, सो द कुशाना किंग्स मेड यूज ऑफ इमेजेस ऑफ वेरियस डेटीज ऑन देयर कॉइन्स. ओके, फिर है टाइम ऑफ गुप्ता पीरियड. गुप्ता पीरियड के टाइम पे क्या हुआ था? So during the time of the Gupta period, the iconographic rules were formulated and standards for sculptural art were set. Okay, iconographic rules को formulate करने में आया था और sculptural arts के लिए standards define करने में आ गए थे. So Gupta period, what happened? The iconographic rules were formulated and standards for sculptural art were set. Okay, simple है. गुप्ता एम्पायर ने क्या हेल्प किया हमें? इन फॉर्मुलेटिंग, बनाने में, सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द स्कल्पचरल आर्ट्स. ओके, और फाइनली Chola kings. What happened during the time of Chola kings? The art of making bronze idols was developed during the time of Chola kings, which is 9th to 13th century. Okay, like bronze idols of Shiva, Parvati, Nataraj, Lakshmi, Vishnu, etc. were made during this period. You know, they're all gods and goddesses, right? So it's easy to remember. Let us now understand architecture and sculpture. India has many rock-cut caves, and this tradition of rock-cut caves originated in India in the 3rd BCE. ओके, इंडिया के अंदर बहुत सारी रॉक कट केव्स है. बहुत यानी बहुत. और ये ट्रेडिशन कब शुरू होता है इंडिया में? इन द 3rd
century BCE. BCE. A quick question here from the first chapter. What else did Indian knew since the same time? वो टाइम से ही थर्ड सेंचुरी से इंडियंस को और क्या आता था? याद करो, फर्स्ट चैप्टर में से ही है। याद करो, जरूर आएगा याद। क्यों नहीं आएगा? नहीं आ रहा है तो आपको फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देखना पड़ेगा। याद आया? Yes, the Indian knew writing as early as 3rd century BCE or even before that. वही जमाने में इंडियन को राइटिंग्स आता था, राइट? दे न्यू टू राइट, या शायद उसके पहले से। पर हमने एक सैड न्यूज़ भी पढ़ी थी वो चैप्टर में, याद है? अनफॉर्चुनेटली वो स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है. Nobody knows that script until now. That's a sad thing. But well, India was doing so great. Yeah? So actually, technically speaking, the complete composition of rock-cut caves represents a union of architecture and sculptural art. Okay? ये जो टेक्निकल लैंग्वेज यहाँ पे यूज करने में आई है. तो जब हम बोलते हैं रॉक कट केव्स, तो वो क्या है? इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ यूनियन. ओके, इट्स नॉट जस्ट ईदर और, इट्स यूनियन. दोनों है. किसका? of architecture and sculptural art. So इसके अंदर architecture भी है और sculptural art भी है. Okay? So have you seen any rock cut caves? कभी कोई rock cut caves देखी है आपने? If you have seen, तो आपको याद आएगा शायद, अच्छे से अगर उसको देखा होगा, कि it has entrances, उसके इंटीरियर्स होते हैं, राइट, विथ कार्व्ड कॉलम्स एंड इमेजेस. अभी हमारे घर के इंटीरियर की बात नहीं हो रही, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ द केव्स, वो जमाने में जो बने थे, राइट. सो वो केव्स का एंट्रेंस होता है. फिर उसके इंटीरियर में क्या होता है? कार्व्ड कॉलम्स होते हैं, इमेजेस होती है एज पार्ट ऑफ दिस स्कल्पचरल आर्ट. ओके. और आपने वॉल्स पे पेंटिंग्स वगैरह भी देखा रहेगा, वॉल्स पे, सीलिंग्स पे, राइट. So the famous Ajanta cave is a rock cut cave, and also one at Veral. Okay, Ajanta caves और Veral दोनों ही महाराष्ट्र में है, एंड दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1983 में बनाया गया था. ओके, एंड बोथ आर रॉक कट caves. Here we again talk about the Gupta period. The temple architecture in India began to develop around 4th century during the Gupta period. Okay, so Gupta period के time पे, during the time of the Gupta's rule, during the 4th century, temple architecture जो है वो develop होना शुरू हुआ था. It began to develop. But what did these temples have? They only had sanctum sanctorum. Sanctum sanctorum. ठीक है? बोले तो गर्भगृह and a veranda with 4 columns. So that is it in this temple. It's not like the temples that we have today. You need to understand that this is just the beginning. ये शुरुआत हुई है. Okay, so शुरुआत के लिए इतना ही था, and then we will see कि ये कैसे आगे जाके develop होता है. टाइम फॉरवर्ड, और हम 4th century से सीधा आप पहुंचते हैं 8th century में, when the temple architecture in India had reached its peak. ओके, अभी हमने देखा कि कितना सिंपल था, राइट. और अभी 4 सेंचुरी के अंदर टेम्पल आर्किटेक्चर है, इट इज एट इट्स पीक, इट्स द बेस्ट वन. ओके, लाइक दे हैव एडवांस्ड सो मच. An example is the Kailas temple of Veral. They've referred here to the Kailas temple of Veral to testify the peak in temple architecture. उन्होंने कैलाश टेम्पल का एग्जाम्पल लेके बताया है कि कितना एडवांसमेंट हो गया था टेम्पल आर्किटेक्चर में. इट वाज एट इट्स पीक, लाइक इट वाज डूइंग सो वेल. इतना अच्छा एडवांस्ड आर्किटेक्चर अभी बन रहा था. सो उसके लिए दे हैव referred to कैलाश टेम्पल. Again, fast forward and we move to medieval period. Of course, now you have many styles of temple architecture in India. अभी influence आ रहा है, right? Now you have many styles. एक style का architecture नहीं है. Now you see varieties of different styles of architecture, temple architecture in India. अभी हमने कहा कि बहुत सारे styles आ चुके हैं, right? So ये कौन से styles है, कैसे समझ में आता है? How do we identify that? Style of temple architecture is identified by the style of the टावर. उसका जो टावर है
उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो स्टाइल है, उसमें से टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल आइडेंटिफाई होता है। और इस टावर को क्या बोलते हैं? शिकारा, शिकार, शिकारा। ओके, so do you know that in India there are two styles of Indian temple architecture? Those styles are main. One is from the north and one is from the south. एक नॉर्थ में है स्टाइल और एक साउथ का है. देन ऑफ कोर्स देयर आर मेनी बट दिस आर द टू मेन वंस. ओके, सो जो नॉर्थ है उसको नगारा स्टाइल बोलते हैं. नगारा बजने लगा. ओके, नगारा स्टाइल फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया. सो एन 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 फॉर नगारा एंड एन फॉर नॉर्थ इंडिया. ठीक है, सो नगारा स्टाइल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया. फिर साउथ में जाते हैं तो वहाँ पे है द्रविड़. हम जनगण के अंदर, हमारे नेशनल एंथम के अंदर आता है वर्ड द्रविड़, राइट? सो द द्रविड़ स्टाइल फ्रॉम साउथ इंडिया. Nagara in the north and Dravida in the south. And what happens when these two styles, that is Nagara and Dravida, are blended? Blending तो काफी हो रही थी, right? So अभी नगारा और द्रविड़ स्टाइल को blend करते हैं तो क्या बनेगा? Silly me. A new style, of course, नया स्टाइल बनेगा, राइट? बट उस स्टाइल को क्या बोलते हैं? वेसारा स्टाइल. वेसारा. ओके, सो लेट्स सी ए सिंपल ट्रिक टू रिमेम्बर दिस. वे, दैट, राइट? हिंदी में वे इज हिंदी वर्ड, राइट? सो दैट. सारा इज ऑल, हर एक चीज, राइट? सो वे सारा, ऑल दैट, मीनिंग बोथ द स्टाइल्स. दोनों स्टाइल्स को कंबाइन करके वो दोनों वे, दोनों स्टाइल्स को कंबाइन किया, वो सारी स्टाइल्स को कंबाइन किया. सो वे सारा. ठीक है, अभी है भूमिजा. भूमिजा, कहाँ जाओ? अरे भूमिजा, किधर जाओ पर? भूमिजा is a style seen in Maharashtra and Madhya Pradesh. महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आजू बाजू में ही है, राइट? MM. So it's a style of temple architecture जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दिखती है. Okay, and this style has a close resemblance to the Nagara style. और नगारा कहाँ का है? NN, north, right? How does Bhumija style work? A series of miniature towers are arranged. Okay, a series of miniature towers are arranged. बहुत सारे छोटे छोटे टावर्स को अरेंज करते हैं, which becomes smaller toward the top. जैसे वो ऊपर ऊपर जाता है वो और भी स्मॉल बनते जाता है. ओके, छोटा होते जाता है. मानो ऐसा लगता है जैसे द टावर appears to be continuously rising from the base of the temple to the top. पहले नीचे सीरीज, उसके ऊपर सीरीज, और जैसे जैसे वो सीरीज ऊपर जाती जाती है तो वो छोटा छोटा होते जाता है. Okay, so let's repeat it. Let's come on, say it with me. A series of miniature towers are arranged which become smaller toward the top. The tower appears to be continuously rising from the base of the temple to the top. Simple. Let us now talk about the medieval period. Yes, the period of the Muslim rule. Mughal period की हम बात करते हैं. And we have studied a lot about Mughal period, right? And we know that it was a blend of so many styles. So Mughal period was a blend of Persian, Central Asian, Arabic, and pre-Islamic native Indian. तो मुगल्स जो आए थे जहाँ से, वहाँ का पूरा स्टाइल्स लेके आए, राइट? पर्शियन, सेंट्रल एशियन, अरबिक. उसके साथ साथ इंडिया का जो नेटिव स्टाइल था, इंडिया का भी अपना एक स्टाइल था, राइट? सो उसको भी उन्होंने ब्लेंड किया. सो दे क्रिएटेड अ फ्यूजन ऑफ ऑल दिस डिफरेंट स्टाइल्स and they've created many beautiful, many outstanding monuments which are even famous today, right? India में लोग उसको देखने आते हैं. We have lots of tourists coming to India to see those monuments. Even Indians travel to see those monuments, right? We have some very world-renowned monuments thanks to the Mughals. अभी हम क्या करेंगे, ये monuments के बारे में आप कितना जानते हैं वो देखेंगे. So we'll study all these monuments that are listed in your book, but हम उसको एक game के जैसा सीखेंगे. Okay, so it's time to play the game and also to learn. आप सीखेंगे भी और रिवाइज भी करेंगे और आप अपना नॉलेज भी चेक करते जाएंगे. सो आर यू रेडी फॉर द चैलेंज?
Here comes your first question. Who am I? कौन है ये picture? किसका है? Do you know this picture is of? Yes, come on. It is Qutub Minar. Okay? और हम बढ़ते हैं अपने next question की तरफ. And the next question is, where am I located? Qutub Minar कहाँ पे है? Where is it located? It is located at Mehrauli near Delhi. Mehrauli near Delhi, okay? Did you get that right? If you did, very good. And if you didn't, no problem. Abhi सीख लो. Mehrauli near Delhi. Simple. And the next question, what is my height? अरे बाप रे, अपनी हाइट पूछ रहे हैं. आपको अपनी हाइट पता है? Well, यहाँ पे हम टावर की हाइट क्या है मालूम है आपको? It is 73 meters and it is the highest minaret in the world. Okay, सबसे लंबा highest minaret है वो दुनिया का. Very good. It has a good record. We should be proud. It is in India. It is in our India. Thank you, Mughals, for giving us this honor. Let us quickly revise everything about Qutub Minar. So this structure is Qutub Minar, which is located at Mehrauli near Delhi. It is 73 meters tall, which is the highest minaret in the world. It is declared as World Heritage. The construction was started by Qutubuddin Aibak. Qutub Minar, okay? So Qutubuddin Aibak in 12th century. And the construction ended at the time of Altmash in 13th century. कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुआ था 12th century में और उसका construction कभी खत्म होता है Altmash in 13th century. So this is Qutub Minar. And here comes the famous monument. Do I need to even ask who am I? आपने already बोल दिया है. It is the famous Taj Mahal. Where am I located? I mean to say, where is Taj Mahal located? It is located in Agra. Taj Mahal की story किसे नहीं पता है? But let's still revise it. Let me still ask you, why was I built? Taj Mahal को क्यों बनाने में आया था? It was built by Mughal Emperor Shah Jahan for his queen Mumtaz Mahal. Okay, इसके लिए Taj Mahal, Mumtaz Mahal. So, Mughal Emperor Shah Jahan ने अपनी queen Mumtaz Mahal के लिए बनाया था. Let's have a quick revision. This is Taj Mahal, located in Agra, built by Mughal Emperor Shah Jahan in memory of his queen Mumtaz Mahal. It's a World Heritage Site again. It is looked upon as the paramount of the beauty of Islamic architecture in India. हम सब जानते हैं, right? Taj Mahal की beauty के बारे में. You have thousands and thousands of people going and seeing it, visiting it every day. So it's a paramount of the beauty of Islamic architecture in India. Here comes another architecture. Who am I? मैं कौन हूँ? पहचान कौन? मैं हूँ गोल गंबज. गोल गंबज. अब मेरा नाम बता दिया तो ये भी बता दो कि मैं कहाँ पे हूँ. Where am I located? I'm located in Bijapur in Karnataka. Bijapur in Karnataka. Bijapur in Karnataka. और मुझे कब बनाने में आया था? मुझे बहुत सालों पहले. यस, बहुत सारी सेंचुरी पहले. नो, मुझे 17th century में बनाने में आया था. I was constructed in the 17th century. Do you know the meaning of गोल गंबश? गोल गोल राउंड, गंबश यानी डोम. सो गोल गंबश आप देख सकते हो पिक्चर में, राइट? वो डोम दिख रहा है ना आपको, वो राउंड है, राइट? सो गोल गंबश, राउंड डोम. और डोम का काम क्या है? मोस्टली आप देखेंगे कि ये जो मुस्लिम आर्किटेक्चर होता है, उनकी मॉस्क वगैरह होती है, वहाँ पे डोम्स रहते हैं, राइट? सो डोम का काम है टू एम्पलीफाई द साउंड
जो आवाज होती है जो बोलने में आता है उसको वो एम्पलीफाई करता है. सो दिस इज साइंटिफिक रीजन. ओके, so it's not just architecture, it is architecture definitely, but there is a scientific reason also. Smart people. I like it. आपको तो सिर्फ मेरा बाहर का रूप दिख रहा है, बट मेरे अंदर ही क्या है आपको मालूम है? अरे बाबा, मैं गोल कम्बश की बात कर रही हूँ. उसके अंदर क्या है? What is inside me? Well, inside me there is a burial of Muhammad Adil Shah of Bijapur. Muhammad Adil Shah of Bijapur. ओके, बीजापुर में लोकेटेड है, हमने देखा, राइट? सो मोहम्मद आदिल शाह का वहाँ पे बरियल है. चलो अभी इसको फटाफट हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इसका नाम है गोल गम्बश. बीजापुर में है, कर्नाटका में. इट वॉज बिल्ट इन द 17th century. गोल यानी राउंड, गम्बश यानी डोम. सो इट्स अ राउंड डोम जैसा आप देखते हैं. इसके अंदर क्या है? इनसाइड द डोम देयर इज अ राउंड गैलरी and there is a burial of Muhammad Adil Shah of Bijapur and Gol Gambash is done. Mughals के बाद आते हैं ब्रिटिश. So again another blending of Indo-Gothic architectural style. Indo-Gothic architectural style. मुंबई में अगर आप चर्च गेट वगैरह साइड जाते हो तो आप वहाँ की जो बिल्डिंग्स है वो काफ़ी डिफरेंट है, राइट? So Mumbai, especially Churchgate side, you see this Indo-Gothic architectural style. The famous station of CST, आपने देखा रहेगा, right? छत्रपति महाराज शिवाजी टर्मिनस जो है, वो जो स्टेशन है, it's an example of Indo-Gothic architecture. Okay? So churches है, government offices थे, residences of top officials, railway stations, ये सारी चीज़ें जो थी were built using Indo-Gothic architectural style during the British period. Okay, जब ब्रिटिश इंडिया में थे वो टाइम पे जो चर्चेस है, गवर्नमेंट ऑफिसेस है, जो टॉप ऑफिशियल्स थे, उनके जो घर थे या रेलवे स्टेशन थे, सब जगह पे इंडो गोथिक आर्किटेक्चर यूज करने में आता था. इंडो गोथिक. कभी टाइम मिलता है वो साइड जाओ, यू विल सी अ ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर देयर. आज भी वो इंटैक्ट है. And so with this, we are done with 2 sections already. And we are heading to the 3rd section. Do remember to subscribe so that you get notification when we upload new videos, right? Do remember to like, share and comment as well so that your friends also can know about it. And the 3rd section is Indian traditions of performing arts. Traditions of performing folk arts. For folk songs, folk dances, folk theatre, folk instrumental music, India has independent and varied traditions, right? इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ों के लिए फोक डांसेस, फोक म्यूज़िक, फोक थिएटर, ये जो भी है उसके लिए इंडिया में बहुत सारी इंडिपेंडेंट अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, राइट? ऑल्सो they are the characteristics of every particular region. इंडिया में, पूरे इंडिया में सेम तरीके का फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस या फोक थिएटर नहीं है. एवरी रीजन हैज इट्स ओन पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग इट. ओके, सो दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन. आप अगर महाराष्ट्र में जाओगे तो उसका अपना होगा, गुजरात में जाओगे तो अपना होएगा, राइट? सो हर एक रीजन का अपना अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड्स, उसका जो स्टाइल है, उसका जो फॉर्मेट है, वो किस पे डिपेंड करता है कि आप वो कौन सी जगह पे हो, कौन सी रीजन में हो. ओके, so every state has its own forms and hence such diversity and variety. Also, they developed as an integral of the religious festivals and social life. Religious festivals और social life, जो हम अलग अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, राइट? ये हमारी जो सोशल लाइफ है, एक दूसरे के घर पे जाना या गैदरिंग्स होना, जो भी है, तो ये जो ट्रेडिशंस है, ये जो परफॉर्मिंग फोक आर्ट्स है, वो ये सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स और सोशल लाइफ के इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल यानी बहुत अहम हिस्सा, ओके, इंटीग्रल पार्ट करके डेवलप हुए. दे उसका हिस्सा होके, अलग होके नहीं, दे आर इंटीग्रेटेड. अब ये सारी चीज़ें फेस्टिवल्स में, सोशल गैदरिंग्स में
देखते हो. So it is present there, it is integral part, अलग नहीं है, उसका हिस्सा है. Okay, so we see them during some festivals and social events. Yeah. So some forms from Maharashtra are कोली डांस, पोवाड़ा, कीर्तन etc. ये सब आपने सुना ही होगा, राइट? कोली डांस है, पोवाड़ा है, कीर्तन है. तो दिस इज ऑल पर्टिकुलर टू महाराष्ट्र. नेक्स्ट है ट्रेडिशंस ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स. आपने देखा होगा हर एक के अंदर पहले फोक आता है, फिर क्लासिकल आता है. ओके, सो नाउ वी लुक एट द ट्रेडिशंस ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स. We बोले तो India has a rich heritage of classical performing arts as well. Do you know the text called as Natya Shastra? Natya Shastra. Natya Shastra actually means performing arts. Okay, Natya Shastra या Natya Shastra जो भी आपको जैसा भी बोलना है वो इसका मतलब होता है performing arts. Okay, so ये जो text है Natya Shastra was written by Bharat Muni. किसने लिखा था? Bharat Muni. Okay, so it's Indian, so Bharat, right? हम इंडिया का नाम हम भारत बोलते तो जो किंग भरत पे से आया था, right? So भरत इंडिया, भारत बोलो, भरत बोलो जो है इंडिया, एंड मुनि, मुनि यानी सेंट, राइट? ऐसी महान किताब लिखने के लिए एक महान आदमी चाहिए, एक सेंट चाहिए, राइट? सो एक मुनि चाहिए. और वो महान मुनि कहाँ से है? महान देश इंडिया से, भारत से. सो भारत मुनि या भरत मुनि. सो दिस टेक्स्ट नृत्य शास्त्र was written by Bharat Muni, and it is supposed to be the earliest one discussing music and theatre. यानी कि सबसे जो बिगिनिंग वाली बुक्स थी, इसके पहले लिखा नहीं जाता था इस चीज़ों के बारे में. सो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट, इट्स द अर्लीस्ट वन, सबसे पहली है जो म्यूजिक और थिएटर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है. For presenting Indian performing arts, there are 9 modes. Okay, जो इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स है, जो क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स है, उसके लिए there are 9 moods, 9 रसस. Okay, कौन से है? श्रृंगार, लव. ओके, श्रृंगार यानी मेकअप, हम सुनते हैं, राइट? ये हिंदी में काफी सुना है, फिल्मों में भी हम सुनते हैं श्रृंगार, विच इज मेकअप. सो समटाइम्स वी डू फॉर हु वी लव, राइट? जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए हम श्रृंगार करते हैं. लाइक फॉर आवर पेरेंट्स, दे आस्क अस टू dress up in a particular way, right? For our family members or our friends or our siblings. So shringar, love. Easy है? Next is hasya. Hasya, we know it means to laugh, right? हंसना. For this we need humor. हंसेंगे कहाँ पे? कोई जोक बोलेगा तब हंसेंगे ना, ह्यूमर होगा तब हंसेंगे, right? So hasya is humor. फिर है बीभत्स. बीभत्स, बीभत्स. ओके, जब आपको बी काटती है, राइट, तो आप क्या करते हैं? उससे रिपेल हो जाते हैं, उससे दूर भागते हैं, राइट? यू रिपेल अवे. सो बीभत्स इज रिपल्शन. ओके, बी ने आपको काट लिया, मधुमक्खी जो होती है आपको काट लिया, तो आप उससे दूर भागते हो, रिपल होते हैं, राइट? सो बीभत्स, विच इज रिपल्शन. देन इज रौद्र. रौद्र यानी टेरिबल. रौद्र, terrible. Then is karuna. Karuna is sad, right? ये सारे जो है काफी जो इजी है, उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे बिकॉज आप आसानी से उसको लिख सकते हो, राइट? सो करुणा, दुख, सैड. देन इज वीर, हीरोइक, राइट? वीर है वो, हीरो है, राइट? हीरोइक. देन भयानक, फियरफुल. ओके, अद्भुत, wondrous. क्या अद्भुत दृश्य था, right? So it was a wondrous scenery, it was a wondrous situation, right? So अद्भुत. And last है शांत, peaceful. शांत, peaceful. अब सवाल है कि इसे हम याद कैसा रखेंगे? So let's look at the trick. So here comes the trick to remember this 9 modes. इन 9 रसों को याद करने का ट्रिक यहाँ पे है. सिनोरिटा ने अपने लव के लिए श्रृंगार किया, पर उसे देखकर लोगों को एक ह्यूमर याद आ गया और हास्य करने लगे. ये देख सिनोरिटा को रिपल्शन फील हुआ और वो बेभत्स हो गई क्योंकि उसे रौद्र टेरिबल लगा. लोग अब
करुणा से सैड हो गए। इन लोगों में एक वीर था जिसने हीरोइक रूप धारण करके भयानक भाषण दिया और लोग फियरफुल हो गए। ये देख सिनोरिटा अद्भुत हो गई और उसे वंडरस फील हुआ। अब सब लोग शांत हो गए जिससे पूरा एनवायरनमेंट पीसफुल हो गया। नाइस स्टोरी है, लेट्स से इट अगेन। सिनोरिटा ने अपने लव के लिए श्रृंगार किया, पर उसे देखकर लोगों को एक ह्यूमर याद आया और हास्य करने लगे। ये देख सिनोरिटा को रिपल्शन फील हुआ और वो बेभत्स हो गई क्योंकि उसे रौद्र टेरिबल लगा। लोग अब करुणा से सैड हो गए। इन लोगों में एक वीर था जिसने हीरोइक रूप धारण करके भयानक भाषण दिया और लोग फियरफुल हो गए। ये देख सिनोरिटा अद्भुत हो गई और उसे वंडरस फील हुआ एंड सब लोग शांत हो गए जिससे पूरा एनवायरनमेंट पीसफुल हो गया। वाह 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 वाह। याद हो गया नो मूड? बहुत आसान है, राइट? ओके, अब यहाँ क्या हो रहा है? Indians are coming in contact with cultural traditions of other nations. Okay? अभी इंडियंस दूसरे नेशंस की जो कल्चरल ट्रेडिशंस है उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, राइट? तर काय होणार? सांगा सांगा. Of course, blending of Indian performing arts with performing arts from other nations, right? इंडिया का जो performing arts है वो और जो दूसरे nations का performing art styles है वो अभी blend होंगे and this will enrich the Indian performing arts over time. इसके लिए we see a lot of varieties of classical, vocal music, instrumental music and dance. Of course, schools also came into existence to preserve these styles. Hindustani music and Carnatic music. Wait. What is this? Hindustani music and Carnatic music kya hai? Well, they are the two main branches of the Indian classical music. Okay? Indian classical music के दो main branches कौन से हैं? Hindustani music and Carnatic music. Also, Indian classical music has two forms. Which are they? Classical, Shastriya, and semi-classical, Upshastriya, right? Shastriya, Upshastriya. हम बोलते हैं अध्यापक्ष, उपाध्यापक्ष, right? Main one and the subordinate one, right? So the classical is Shastriya and semi-classical is Upshastriya. The semi-classical has included many styles of folk music. If you have seen some forms of Indian classical dance, अगर आपने कोई इंडियन क्लासिकल डांस देखा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि they have a beautiful blend of all three forms of music, vocal and instrumental and dance, right? Music, vocal, instrumental and dance का एक beautiful combination उन्होंने बनाते हैं. And here are some examples of Indian classical dance. Kathak from North India. North India में क्या है? कथक. ओके. लावनी फ्रॉम महाराष्ट्र, ये तो आपको जरूर पता होगा. ओडिसी फ्रॉम ओडिशा. ओके. ओडिशा, ओडिसी, राइट? देन भरतनाट्यम फ्रॉम तमिलनाडु. ये सब हमको बहुत मालूम है, राइट? हम देखते रहते हैं. सो भरतनाट्यम फ्रॉम तमिलनाडु एंड कथकली एंड मोहिनी अट्टम फ्रॉम केरला. कथकली एंड मोहिनी अट्टम फ्रॉम केरला. आपको पता है इंडिया में बहुत सारे म्यूज़िक और डांस फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होते हैं. बहुत सारे अलग अलग जगहों पे ये जो म्यूज़िक और डांस फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होते हैं. पर क्यों होते हैं? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? यस, विद एन ऑब्जेक्टिव टू मेक इट एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल, ताकि सबको उसके बारे में पता चले, एक्सेस कर पाए, राइट? सो इट इज़ द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक इट एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल लाइक यू एंड मी. And it's also open for the foreigners to attend. Okay, so खाली इंडियन ही नहीं, वहाँ पे फॉरेनर्स भी उसमें जा सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे आपकी बुक में एक फेस्टिवल का नाम दिया है जो है सवाई गंधर्व, जो पुणे में होता है. तो कभी पुणे जाते हो तो आप ये देख सकते हैं. Of course, this is not done on all the days. They have a specific time when these festivals are organized. Okay, so सवाई गंधर्व
फेस्टिवल ऑफ पुणे, और जो पुणे में रहते हैं ऑफ कोर्स वो आराम से उसको अटेंड कर सकते हैं, विच इज बिकॉज इट्स जस्ट देयर इन दैट सिटी, राइट? और दिस डेज वी सी लॉट ऑफ फ्यूजन ऑफ वेरियस म्यूजिक स्टाइल्स, राइट? बहुत सारे फ्यूजन हमको देखने मिलते हैं, देयर आर नो लिमिटेशंस एंड दैट्स cool. That's why we have so many varieties, right? So one artist who successfully created a fusion of Indian classical dance and European opera is Pandit Uday Shankar. Pandit Uday Shankar. Okay, so he was the one who created a fusion of Indian classical dance and European opera. Yeah, so Pandit Uday Shankar also included various forms of folk dance in his style. Thus, there is no limit. The scope is wide and is constantly expanding. And it is true for all the field of Indian visual arts, okay? हर एक फील्ड में परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर या आर्ट्स के अंदर हम देखते हैं फ्यूजन हो रहा है, ब्लेंडिंग हो रही है, राइट? एंड इट्स नॉट ए न्यू फिनोमेना. ये पास्ट में भी होता था और अभी भी हो रहा है, अभी ज़्यादा हो रहा है बिकॉज अभी एक्सेस बढ़ गया है, राइट? अभी टेक्नोलॉजी भी उतनी बढ़ गई है. सो there is no limit. And here we are on the final section of the chapter. Art, applied art, and professional opportunities. Let's kill this also. So, first is art. Art history is an independent branch of knowledge. It's an independent branch of knowledge, right? जिसका मतलब क्या होता है कि it can be done by itself. And it has various opportunities of research. उसके अंदर आपके पास बहुत सारी opportunities है research करने के लिए. So you can think of this as a career option too. Art historians can work in the field of journalism. Journalism में भी art historian को job मिल सकती है. Okay. Also, there's an opportunity in the art market. अभी हम यहाँ पे देख रहे थे जो आर्ट हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, राइट? करियर अपॉर्चुनिटीज. तो एक है जर्नलिज्म, दूसरा है आर्ट मार्केट में. सो आर्ट मार्केट में उन लोग क्या करेंगे, आर्ट मार्केट में उनका रोल क्या होगा? टू असेस द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन आर्ट ऑब्जेक्ट. ओके, जो आर्ट ऑब्जेक्ट है उसको उसको परखना, उसको समझना और बताना कि उसकी वैल्यू क्या हो सकती है. And importantly, to ensure the genuineness of the product. ये जो ऑब्जेक्ट है, आज मैं जाके बोलती हूँ मेरे पास ये आर्ट ऑब्जेक्ट है कुछ 10 सेंचुरी पुराना, तो जेन्यून है कि नहीं, या मैंने अभी कभी बना के ऐसे ही कुछ करके दे दिया, राइट? उसका जेन्यूननेस समझना है, जेन्यून है, सही है, बराबर है कि नहीं, वो देखना और उसका तोल लगाना, उसका दाम लगाना, राइट? उसका एग्जैक्ट वैल्यू. सो दिस इज व्हाट दे कैन डू इन द फील्ड ऑफ आर्ट मार्केट. और थर्ड जो है वो heritage management and cultural tourism. So heritage management and cultural tourism में क्या होगा? What opportunities do they have? It includes opportunities like museums and archives management, right? So museums है उसका management, archives and जो पुराने records है सब उसको manage करना, library science and information technology, archaeological research, Indology. Okay, so all this comes under heritage management and cultural tourism. So it includes museums and archives management, library science and information technology, archaeological research, and Indology. Fine. Next is applied art. We all know that visual and performing art is to entertain people, right? जो ये आर्ट फॉर्म्स है अलग अलग जो भी हमने अभी तक देखा है, सबका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लोगों को एंटरटेन करना, राइट? एंड वी ऑल गेट एंटरटेन. हम उसको देखते हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हम अपने आप को एंटरटेन करते हैं, राइट? बट जब ये आर्टिस्टिक क्रिएशन के साथ में, ओके, व्हेन दिस आर्टिस्टिक क्रिएशन कैन बी कंबाइंड विद यूटिलिटी वैल्यू to make it economically viable. ओके, तो ये आर्टिस्टिक क्रिएशन के साथ में अगर उसका यूटिलिटी वैल्यू ऐड करने में आता है ताकि वो इकोनॉमिकली वायबल हो, तो वो होता है अप्लाइड आर्ट. ओके, सो आर्टिस्टिक क्रिएशन with a utilitarian purpose is called applied art. Artistic creation with a utilitarian purpose is called applied art.
And here is the list of the fields of applied arts. बहुत लंबी list है, so I will be reading it quickly and it's quite simple as well. लंबी है तो उसे डरना नहीं है क्योंकि वो simple है. So let's go. Industry and advertisement, design and ornamental object, art design of stage backdrops, art direction for films and television, creating attractive layouts of books and magazines, calligraphy, production of greeting cards, customized stationery, gift objects, etc. थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो आराम से याद रह जाएगा. Okay? It also includes architecture, photography, still and animated graphics created with the help of computers, ornaments, artistic creation of metals, earthen pots with colorful designs, objects made from cane and bamboo, beautiful glass objects, attractive textiles and clothing. As I said before, listen carefully and it's very simple. कुछ नहीं, इसमें अपना दिमाग लगाना है, राइट. आपको सब तो नहीं लिस्ट पूरी लिखनी है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको कम से कम आराम से अपने दिमाग से 8-10 नाम तो लिख ही सकते हो. इट्स वेरी सिंपल. आर्ट कहाँ पे होता है, आपको सिर्फ लिखना है. आप कैलीग्राफी जानते हो, फिल्म प्रोडक्शन जानते हो, राइट. फिल्म के अंदर जो स्टेजेस बनते हैं, टेलीविजन के अंदर फिल्म बनाने के लिए डायरेक्शन चाहिए, राइट. जो हम स्टेशनरीज बनाते हैं, अर्दन पोट्स है या बैम्बू की कोई चीज़ है, तो जहाँ पे भी आपको आर्टिस्टिक चीज़ें समझ में आती है, फोटोग्राफी, आर्किटेक्चर, बस वो लिख देना है. इट्स नॉट डिफ़िकल्ट. लंबी लिस्ट है बट बहुत ही आसान है, अपना दिमाग लगा के उसको लिख देना है. ओके, नथिंग टू बाय हार्ट ओवर, या कुछ रट्टा मारने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. ऑल दिस फिल्म्स जिसके हमने अभी लिस्ट देखी, दे ऑल नीड detailed planning and management at every stage of production. Okay, they need detailed planning and management at every stage of production. नहीं तो बबुआ गड़बड़ हुई जाएगी. ओके, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ट्रेन एंड स्किल्ड लोगों को ही एम्प्लॉय कीजिए. पैसा बचाने के चक्कर में किसी को भी मत डालिए. स्किल्ड एंड ट्रेन्ड लोगों को ही एम्प्लॉय करना चाहिए. ये जो आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स है उसके जो प्रोडक्शन है, सम ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेसेस have a history of certain traditions. Okay, and also the development of each productive process has its own history. Simple. हर एक प्रोडक्शन जो हो रहा है, some of the production processes have a history of certain traditions. And also the development of each productive process has its own history. Therefore, the training courses of art design includes the history of various industrial and cultural traditions. Okay, training course में क्या होता है? They have the history of various industrial and cultural traditions. Yeah. Have you heard of the National Institute of Design in Ahmedabad? Well, it is a world-renowned institute that offers technical and occupational training in some of the fields of applied art. There are a few more institutions too that offer this technical and occupational training in various fields of applied art. But this one, NID करके जो है, National Institute of Design in Ahmedabad, it's a world-renowned institute. It's information for those who are considering their career in the field of arts. So here we are, done with the whole chapter. Wasn't that easy? Do you say that happy history now? Yes, it's very simple. I'll come with more videos for all the chapters. Do keep watching them. Keep watching them again and again ताकि आपको वो याद रह जाए. बराबर से एक बार देख के छोड़ नहीं देना है, बार बार रिपीट करना है. आपको बीच में ब्रेक लेना है तो ब्रेक लीजिए, पर इसे बार बार देखिए क्योंकि इसमें आपके पास पिक्चर्स है, आपके पास वॉइस है, तो आपको इजीली ये सब चीज़ें याद रह जाएगी. ओके, so keep watching and I wish that you score really well in your exams. Thank you very much. Do remember to subscribe so that you get notification when you upload new videos, right? Do remember to like, share and comment as well so that your friends also can know about it.